और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया और उसके बाद से इतना स्वदेश पर लगातार हम अलग अलग तबके के लोगों का रिएक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस समय मेरी सहयोगी नयनतारा राय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से खास बातचीत कर रही हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको वहीं पर। 1,000 crores. Well, look, whenever there is capital expenditure, it results in not only immediate but medium-term, long-term economic growth. Housing is doing very well. I mean, we had a situation earlier and you talked about affordable housing. I've always said affordable housing is the flavor of the season when I started. But you know, we've sanctioned 1 crore 14 lakh units for the urban Pradhan Mantri Awas Yojana. But affordable housing takes place even after that. I mean, it takes place in the private sector. People provide loans, the private sector in it. Over and above all this, please remember, real estate is beginning to look good. Some of the states are doing exceptionally well. In some areas, there are residual problems, which are legacy issues in the area around Delhi, but I'm sure slowly we're getting those sorted out as well. I'm very bullish in terms of the overall budget. It's got a thumbs up everywhere. You mentioned the stock exchange. Of course, there are some political leaders who are still bemoaning the fact that it's a very successful budget. I don't want to name two I was asked about on a show that I was on earlier. But I think there's a lot of feel good about this. It's forward looking. It's a visionary budget. Budget is how you're describing it, and I'm not going to get into the politics of it at all, Mr. Hardeep Puri, because the numbers will also speak for themselves, and as they have after the last union budget. But it is my job to play devil's advocate. So you're right, we've seen GST record collections for 4 months in a row, in fact, more than 1 lakh crore rupees. There is tax buoyancy, which has allowed the central exchequer to loosen the purse strings and announce a lot of 7 growth engines, infrastructure plans. But for the common man, at a time when inflation is going up, and like I said, I'm going to play devil's advocate, no tax cuts, nothing to rein in inflation either. Madam, let me put it this way. I like the fact that you sometimes play devil's advocate. I also like to play devil's advocate. You know, if you brought the income tax levels already down, how much more down do you want to take them? Who is the common man? The common man is the person who for 80 crore and more common men got 3 times rations in a day for an extended period, which is going to go on till March. Who is the common man? The common man is the person who got the free vaccine, and we have distributed 172 crore vaccine doses. Who is the common man? The common man is the person who is getting the free Ujjwala cylinders. And during the pandemic, 3 refills were given. So I think we tend to do what I call definition hopping or shopping sometimes. I think this budget is all about those people. This budget reaches out to the farthest, to the weakest element, and also is designed for growth. Because today we have come out of the pandemic syndrome. We are not out of the pandemic, but remember what happened last year, where we were. Today we can say with confidence that we have restructured ourselves, and today the fact that you are registering a 9.2% rate of growth for the fiscal year ending March, and you are confident about 8.5%, 8 or 8.5% going forward, that is the growth which comes down. When you do Pradhan Mantri Awas Yojana, how much steel do you consume? How much cement do you consume? Does it result in employment? When we build infrastructure project, and I think that the crowning glory of that is a 35% increase in capital expenditure. That is what the common man is all about. Oh, absolutely. There's no denying it. As soon as a 35% increase in capital expenditure came out, we saw the enthusiasm in the stock markets as well. The way, you know, steel prices shot up, the way the banking stocks also went up. And there's no denying that there is certainly enthusiasm on ground when it comes to that higher expenditure. But Hardeep Singh Puri, sir, you will have the unenviable task of making sure that our import bill
doesn't go out of control, that the fisc stays in control because of the other hat you wear, which is of the Union Minister for Petroleum and Natural Gas. Of course, we can't do much about it, but globally prices are going up when it comes to crude oil. So going beyond the budget, can I put it this way, a missed opportunity maybe to give the same common man relief when it comes to petrol, diesel prices, the same common man who is having to pay lifetime high prices? I would have been disappointed if you had not asked that question, because this is a question I was waiting for. Look, the budget is not designed to deal with global points of tension, exacerbation of tension in the South China Sea or somewhere in Eastern Europe. The budget is designed to deal with your own management, your revenue and your expenditure. Now, what have we done? We don't need to do it through the budget. We have taken concrete steps to increase the area under exploration and production from the 7 to 8% of our total area to 15% in 4 years' time, or 3 years, 4 or 5 years' time, to 30% in about 10 years' time. We are increasing the fuel blending, which was difficult to achieve 5% in 2005 and 6. We have already achieved 9% yesterday. We will have 20% ethanol blending. Earlier it was, the target was 2030. We brought it to 2025. We are acquiring more assets. We are ensuring that our ability to insulate ourselves and not remain vulnerable to global development, that is enhanced. And that is what we will succeed in doing. As for unenviable position, well, I've been placed in quite a few. You had discussions with me on civil aviation when I was there, just now on Central Vista. Well, that, I think, as long as you have a leader like Mr. Modi, who's willing to take tough, bold decisions and has a far-sighted vision, the rest of us fall in line and we are able to ensure. Yes, we have already initiated action to see what we can do. We can reach out to the producing countries, see what diplomatic margin of persuasion we have. We can talk to the consuming countries. We can take indigenous steps. Make sure that the assets, where we have them, all right, that those are extracted and used for the national effort. I'm positive that in a few months' time, you will see the concrete results of the efforts that we put in the last few months. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वहां पर मेरी सहयोगी से बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है वो आम लोगों के लिए ही बनाया गया है। सरकार की जो योजनाएं हैं उससे न सिर्फ स्टील की कीमतों को मदद मिलती है, सीमेंट की कीमतों को मदद मिलती है, बल्कि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। चलिए कुछ और बारीकियां आपको बताएं। फोकस एक बार करेंगे वित्त मंत्री के भाषण पर ही। आज संसद में आम बजट पेश किया गया और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है। वित्त मंत्री ने इस बजट को आम लोगों का बजट बताया है। सरकार ने बजट में केपेक्स बढ़ाने, क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाने जैसे कई ऐलान किए हैं। बजट में आयकर दरों या स्लैब्स में कोई बदलाव की उम्मीद लगाए टैक्स पेयर्स को निराशा ही हाथ लगी है। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री के मुताबिक 2 साल से कोई टैक्स ना बढ़ाना ही बड़ी राहत है। Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in a little verse from the Mahabharata. I won't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return
India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. और वहीं जीडीपी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद भी देश की इकोनॉमी की स्थिति बेहतर है। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, sir, I want to take a moment to express my empathy for those who had to bear adverse health and economic effects of the pandemic. The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. Further, the speed and coverage of our vaccination campaign has helped greatly. With an accelerated improvement of health infrastructure in the past 2 years, we are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. Honorable Speaker, we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. वहीं वित्त मंत्री ने एक बार फिर से बताया कि जल्दी ही एलआईसी का आईपीओ आएगा, साथ ही पीपीपी मॉडल से निवेश को बढ़ाया भी जाएगा। With potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of 30 lakh crores during next 5 years. Towards implementation of the new public sector enterprise policy, the strategic transfer of ownership of Air India has been completed. The strategic partner for Neelanchal Ispat Nigam Limited has been selected. The public issue of the LIC is expected shortly. Others too are in the process for 2022-23. The National Bank आपको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर मिलेगा, बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए। The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में किस तरह के ऐलान हुए हैं, आइए सुनते हैं खुद वित्त मंत्री जी से। The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport.
PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The National Highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. और इस बार के बजट में सोलर एनर्जी पर काफी फोकस रखा गया है और इस सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। To facilitate domestic manufacturing for the ambitious goal of 280 gigawatts of installed solar capacity by 2030, an additional allocation of 19,500 crores for PLI, production-linked incentive, for manufacturing of high-efficiency modules with priority to fully integrate manufacturing units from polysilicon to solar PV modules will be made. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की जमकर तारीफ की और बजट को सभी क्षेत्रों के विकास का बजट बताया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। और आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय का इंटरव्यू। बजट पेश होने के बाद हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने ईवी को बढ़ावा देने वाले ऐलान और बैटरी स्क्रैप पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। महेंद्र नाथ पांडेय जो कि हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं और उनसे समझेंगे कि क्लीन एनर्जी को लेकर के सरकार आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाएगी। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही कि जिस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का जिक्र बजट में किया गया है, इसको लेकर के क्या आगे के कदम रह सकते हैं, रोड मैप क्या रह सकता है सरकार का? देखिए, पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो एसीसी बैटरी निर्माण और ऑटो सेक्टर में दोनों फील्ड में ये जो है ऑटो सेक्टर के ऑटो चैंपियंस में और एकमा सेक्टर में भी हमने काफ़ी इसमें चीज़ें स्कीम घोषित की है। गुड रिस्पांस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस उस पीएलआई स्कीम का आ रहा है। लेकिन उसमें जो बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी पर आज बजट में उन्होंने घोषणा की, ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि बैटरी अदला बदली करके और रुकना नहीं पड़ेगा। और ये जो सरकार की नीति है ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने का, और उसकी कई क्रांतिकारी पहले हैं। अब इसमें से एक बड़ा प्लस हो गया कि ये नीति आगे डिटेल में हम आएंगे लेकर के कि बैटरी ऑलरेडी चार्ज बैटरी रहेगी और उसे उस
चेंज करते हुए आदमी मूव करता जाएगा। अच्छा, तो उसका जो 2-4 घंटे 1 घंटे अभी जो कई घंटे चार्जिंग में लगता था, वेट करना पड़ता था, उससे बचत होगी। अभी उसमें भी हम लोग क्रांतिकारी बदलाव लाने की कई कदम उठा रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जोर दे रहे हैं, इसके एक कदम आगे भी हाइड्रोजन का भी एक अहम पहलू देखा जा रहा है कि हाइड्रोजन भी एक हकीकत बने। हाइड्रोजन फ्यूल गाड़ियाँ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन मिशन बनाया हुआ है, मंत्रियों का एक समूह भी बना हुआ है, और जैसा उन्होंने लाल किले से इस पर संबोधन में कहा था, सो बहुत तेजी से भारत सरकार काम कर रही है। और वहीं इजनाव स्वदेश से बातचीत करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भी बजट की जमकर तारीफ की और ऊर्जा को लेकर किए गए ऐलान पर खुशी जताई है। इस बार बजट में पावर मिनिस्ट्री के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ है। हमारे साथ केंद्रीय पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह है। सर, इजनाव स्वदेश पर आपका स्वागत है। काफ़ी कुछ है बजट में इस बार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। मैं शुरुआत पीएलआई स्कीम से करूंगा। करीब 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन है जो मौजूदा स्कीम है। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, और ये जो मौजूदा स्कीम है जिसमें करीब 4500 करोड़ का आवंटन पहले से है, तो ये इसको कितना बढ़ा सकते हैं आप? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपेसिटीज़ हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। जिस गति से हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, जिस रेट से हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस रेट से कोई और दूसरा देश नहीं कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमको क्लाइमेट प्यारा है। हम चाहते हैं कि एमिशंस कम हो ताकि हमारा पर्यावरण सुदृढ़ हो। और अभी तक क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, तो बहुत सारा जो सेल्स और मॉड्यूल्स हैं वो इंपोर्ट होते थे कुछ कुछ देशों से। हमारी यह मंशा है, सरकार की यह मंशा है कि साहब हम इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहें, ये हमारे यहाँ मेक इन इंडिया हो। इसी के लिए पीएलआई स्कीम है। इस 19,500 करोड़ से हम करीब करीब 40 से 45 हज़ार मेगावाट उत्पादन क्षमता बनाएंगे, पॉलीसिलिकॉन से लेकर करके सेल्स मॉड्यूल्स तक। पीएफसी के जो फंडिंग पैटर्न है वो कम हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स आरईसी पीएफसी को कम हो जाएगा क्योंकि ये फंड्स हमको उपलब्ध हो जाएंगे। और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमको फंड्स की ज़रूरत होगी। ग्रीन कॉरिडोर फेज़ 2 उसके लिए कुछ तो हमारा प्रावधान ऑलरेडी हो चुका है, वो कुछ और हमको प्रावधान करना है क्योंकि हम लद्दाख में भी 10,000 मेगावाट जनरेट करेंगे, वहाँ से भी हम ला रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन सर, ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र आपने किया, कब तक आएगा? क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पीएलआई की बात की जा रही है। तो नहीं, वो देखिए हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन पर पॉलिसी का प्रारंभिक भाग है वो तो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हमारा पूरा कंसल्टेशन हो गया है, तो वो पॉलिसी आ जाएगा, उसके बाद हमारे बिड्स चालू हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो कुछ और हम इसको पॉलिसी को आगे ले जाएंगे उसमें वो फिर उसका एक अलग से आदेश निकलेगा। तो अभी जो हम कर सकते हैं वो करके तो हम तुरंत निकाल रहे हैं, तो 15 दिन में वो निकल जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। इसमें भी हम अग्रणी रहेंगे, जैसे स्टोरेज में हम अग्रणी है ना, उसमें भी रहेंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर इजनाव के कंसल्टिंग एडिटर स्वामीनाथन अय्यर का क्या कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं। ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि रिस्क टेकिंग बजट है। बहुत से बजट टैक्सेशन के बारे में होता है, ये तो स्पेंडिंग के बारे में होता है, और स्पेंडिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट बजट है। ये कह रहे हैं कि इस इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी चीज इन्वेस्टमेंट है। इसके वजह से 35% गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले हैं इस साल पे। इतना पहले कभी मेरे ख्याल में कभी बढ़ा नहीं है, और ये रिस्क ले रहे हैं। इनका जो फिस्कल डेफिसिट है, जेटली साहब कोशिश करते थे कि 3.5, 3.2, 3.0% ऑफ जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट करें, यहाँ तो 6.4% निकाल रहा है। ये बहुत बड़े रिस्क ले रहे हैं क्योंकि जब इतने बड़े फिस्कल डेफिसिट हैं, इसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और अब अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में आ रहा है, तो ये रिस्क ले रहे हैं। इस बजट में इन्होंने रिस्क लिया कि हम ग्रोथ के लिए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट
के वजह से अपना इकोनॉमी बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ के लिए 8.5%, इसके वजह से और बहुत से प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और अगर इन्फ्लेशन होए थोड़े रिस्क ले ही लेंगे। और इसके वजह से उन्होंने वो टैक्स साइड पे बहुत कम किया है। अगर आप पूरा देखिए, बहुत से बजट्स टैक्स के बारे में होते हैं, ये बजट सिर्फ स्पेंडिंग के बारे में है। जो मेन टैक्स प्रपोजल्स है कोई चेंज है ही नहीं। उन्होंने सोच लिया कि जो कंटिन्यूटी ठीक है, जैसे ही था वैसे ही रहने दो, छोटे मोटे चेंज यहाँ वहां हैं, मगर ब्रॉडली स्पीकिंग टैक्सेशन साइड पे चेंज नहीं है। इनके सबसे ज्यादा एम्फोसिस है कि स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग। मैं इतना ही बोलूं कि इसमें कमी ये है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला कि जो प्राइवेटाइजेशन होना था, कि एसेट सेल्स होने थे, कि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के नया इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें प्रगति बहुत धीरे धीरे चल रहा है। एयर इंडिया हुआ और अभी अभी मुश्किल से एक नीलांचल इस्पात हुआ, मगर पहले वो कह रहे थे कि 175,000 लाख करोड़ निकालने वाले थे। सेल्स बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत धीमे हैं, और ये एक साल के बाद दूसरे साल के बाद चल ही रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि ये इतना धीमा क्यों है। इतने बड़े बड़े प्लान्स होते हैं और असली में जो इन प्राइवेटाइजेशन के पैसे या एसेट सेल्स के पैसे इतने कम क्यों हैं। इस साल फिर हो गया, इसके बारे में बजट में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। फाइनली हम इतना ही कहेंगे कि मेरे ख्याल में सब्सिडीज बहुत बढ़ गए होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी और ऑयल सब्सिडी तीनों बढ़ गए होंगे। इसके वजह से फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊंचा है, तो इस पे भी वो रिस्क ले रहे हैं। हम इतना कहेंगे कि तो ये रिस्क टेकिंग बजट है। वो कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि इस बजट में हम ग्रोथ के बारे में जाएंगे, और जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा उसके वजह से हमें फायदा हो जाएगा, और चीजों के बारे में हम इतना फिक्र नहीं करेंगे। स्वामीनोमिक्स के जरिए स्वामीनाथन अय्यर जो हैं वो अपनी राय बताते हुए यहाँ पर केंद्रीय बजट पर चलिए लेंगे